क्या मेरी आवाज आ रही है? Let me see if I am audible or not. Hello, 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 hello. Okay, so I guess my voice is clear now. Okay, so let's again start from the question जहाँ से हमने लास्ट स्ट्रीम बंद करी थी, या फिर वो बंद हुई थी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज. Just a second. Let me. Stream quality excellent. Okay. Okay, so let's start. So ये क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम, पावर ऑफ x की पावर n, जिसमें रन टाइम एरर आ रहा था. आई गेस ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल चुका है. मुझे ड्राइवर भैया प्लीज हेल्प. Initialize the result answer to 1. All right, this serve as the base case where any number raised to the power of 0 is 1. All right, check if the exponent n is less than 0. If it's less than 0, invert by okay doing reciprocal, and make n positive by setting n को माइनस n करके. ठीक है, यही तो मैंने भी किया है. अगर हमारा n नेगेटिव है तो हमने उसकी पावर को रेसिप्रोकल कर दिया, और हमने उस नंबर को माइनस n कर दिया, जिससे कि वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. यूज a loop to iterate from 0 to n. In each iteration multiply answer by x. आंसर को x से मल्टीप्लाई करना है एवरी टाइम. All right. Return the result stored in answer, which now contains the value of x की power n. Okay. बट मुझे समझ में तो आ गया, बट why is it giving runtime error? Hmm. और कहीं ऐसा तो नहीं है. एक सेकेंड. इंट n इक्वल्स n. अब यहाँ पे हम करेंगे n, n, n. ऐसे काम चलेगा क्या? आई डोंट थिंक. आई डोंट थिंक. ओके, रन टाइम एरर तो सॉर्ट हो गया.
बट अब इशू आ रहा है इसके रॉन्ग आंसर में। 2 की पावर -2 मतलब नेगेटिव में ये हैंडल नहीं कर पा रहा अभी सही से। आउटपुट 1 आ रहा है बट मेरा आउटपुट 0.2500 ऐसा कुछ आ रहा है। देखो मैंने हाइड्रेट भी किया है, ये भी किया है। ओके बट कुछ तो भी गलती है अभी। इफ आई ट्राई रन, सो एक्स यहाँ पे एन नेगेटिव है, अगर एन नेगेटिव है तो हमने एक्स को कर दिया 1/x, मीन्स एक्स हो जाएगा अपना 1/2। ठीक है, और एन हो जाएगा अपना पॉजिटिव, तो 1/2 विच विल बी 1.1/4। डबल आंसर अपना 1 है। अगर एन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, जब तक पॉजिटिव रहेगा, एन अपना अभी 2 है, तो एन चेक करेंगे कि वो ऑड है इवन है। तो एन तो अपना इवन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम कर देंगे एक्स इंटू एक्स, सो इट विल कन्वर्ट 1/2 1/4। नहीं यार कुछ तो गलती है अभी। नहीं कोड नहीं देखते, रुक जाओ अभी कोड नहीं देखते, थोड़ा सा और ट्राई आउट करता हूँ, मे बी इफ आई कैन अटेम्प्ट दिस वन। Ansari Arif brother, how to switch to this layout? Bro, it's easy, like if I can just click, hold here and bring it here like this, so यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे, that's how you can switch this। और यहाँ पे आप पकड़ के टैप एंड होल्ड करके इसको वापस यहाँ पे ले आओ, सो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। आई होप यू गॉट दैट। ओके सो आई एम डम बैश भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है वाला। गलती हो कहाँ पे रही है? लाइक मेरा आंसर 0.05 आना चाहिए बट ये 1 आ रहा है। तो इनको लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं पहले से। ठीक है, और कहीं ऐसा तो नहीं है। एन, ऑप्शन एन, फिर यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे एन, इसको करके ऐसे कर दो ऑन 10 सबमिट। ओके मतलब यही एरर था। लेट्स सबमिट दिस।
Finally. Learn X math dot power X power. Bro, look here. See, how do I zoom this? Oh, it's not zooming. Bro, you can see here. पहली लाइन पे मैंने यही लिखा था, रिटर्न पावर एक्स की पावर n. But in this question it's clearly mentioned, कहाँ लिखा है, हमको इम्प्लीमेंट ही करना है इस चीज को, लाइक वी हैव टू इम्प्लीमेंट पावर ऑफ एक्स कॉमा एन, यू गॉट दैट, which means we are not supposed to use that function, that built-in function. That's why. Although ये तो brute force है भी, इसका भी optimization है as written here. Optimal approach. Define a helper function that handles the recursive calculation of the power. So we have to define helper function that handles the recursive calculation. If the exponent of n is 0, okay, okay, I think, bro, network quality again poor. प्लीज़ मत हो भाई, अभी तक कितना अच्छा नेट आ रहा था, मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा था. Okay, let's go to this. ये तो अपना हो गया brute force. Is there any hint or something like that? Let's see discussion. Return x. How are you? How are you doing the layout shifts? Huh? I'm not able to do that. Bro, look at here. So मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो बेसिक लेआउट होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट? Now what you have to do is, you see this portion, this bar. Now click here and hold here and try to bring this to this. As simple as that. That's how it works. Or there is a way to change layout. नहीं, यहाँ पे तो नहीं है. But as I told you, you have to do in that way so that you can do this. How to optimize this? I think I have to search this question on Claude because I'm unable to do this, being very honest. Network broke, please. Don't fluctuate like that. Okay. So, hey Claude, I'm solving lead code. Which question? 50. I've coded the brute force. Now tell me how to optimize the code. Huh?
Network connection, bro. It's excellent here. What the hell? भेज ब्रूट फोर्स कोड देख के बताता हूँ कैसे ऑप्टिमाइज करना है. ओके ब्रो, टेक दिस. Network issue. I think someone told me in comments use binary search or something like that. Let's see. Okay, is that the optimized code? एन को लॉन्ग लॉन्ग रखना ज़रूरी है क्योंकि एन एंड में को नेगेट. हाँ वो तो ठीक है. चलो फिर इफ दिस इज ऑप्टिमाइज्ड कोड देन व्हाट्स. ओके, दैट्स द रिकर्सिव वे आई गेस. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. Okay, so this one done. Now let's move to majority element question. What's the question here? Given an array nums of size n and return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. Okay, so what I can think of is first of all sort nums dot begin nums dot and return nums of nums dot size by 2. Is that okay? Will this work? Okay. Will this get accepted? Yes, let's go. It's 100%. As simple as that. But the time complexity for this is n login. And oh, to solve the problem in linear time. It means they're asking to solve this question on big O of n. Can we and constant space, so we are not supposed to use a frequency or something like that. So by the way, if someone is thinking like how does this work, so let me tell you. If a number is there in an array more than half times, so after sorting, the middle element will always be the majority element. You can try run on this. So yeah, but let's optimize this now. Let's see how to optimize this. Like they're asking to two in big of one. So I think there is something called Murray's voting algorithm. Is that algorithm for this question or for other question? Wait, Murray's voting algo. Ah, okay. We traverse the array and maintain two variables, a candidate and a count vote. Set the candidate. If count is 0, we choose the current element as our new candidate and set count to 1. Okay. If the current element matches the candidate, we increment count plus 1. If current element does not match the candidate, we decrement count 1. When count hits 0, it means previous candidates have completely. दो फेज होते हैं इस पे. इफ काउंट बराबर 0, तो फिर कैंडिडेट को कर दो नम्स ऑफ आई और काउंट कर दो 1. अगर काउंट कर तो काउंट प्लस प्लस करना, काउंट माइनस माइनस कर दो.
if num बराबर candidate. Okay, let's try solving this. So voting algo int candidate equals 0 and count equals 0. All right. Okay. Now for int I equals 0, I less than num dot size I plus plus. If count equals 0, then candidate equal nums of I, and what to do? Count equal 1, or count plus plus, count equal 1. Okay. Else if count greater than 1. No, no. Nums of I equal candidate. So count plus plus, else count minus minus. So yeah, that's it, I guess. So after this, after this, for again int I equals 0, I less than num dot size I plus plus, if uh, what to do. Okay, if nums of I barabar candidate frequency plus plus, here we will define 0, and if not here but here, if frequency is greater than num dot size by 2, return candidate, return minus 1. Let me see if that works. अंसारी आरिफ, थैंक्स ब्रदर, चलो अच्छी बात है, आपका अगर आपका हो गया तो. Okay, this question is already accept. Okay, done. Let's go. So, but I think I have solved it even short. Let me see. Uh, Here it is. Yera Mure voting. Oh, it is that simple. Uh, Candidate answer, if f equals 0, means if count equals 0, then answer is nums of I. क्या आ गया, नेटवर्क शायद से चला गया, गॉड नोस. चलो ठीक है.
So if current count is 0, then we will put nums I in candidate and count को 1 कर देंगे. Else if nums equal candidate, count plus plus, else count minus minus. Okay, all right. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Majority element 1, now majority element 2. Okay, I have attempted this, but I have not solved this question yet. Let's see. इस बार अपने को find all elements that appear more than n by 3 times. Okay. 3 to 3. N is here 3. 3 by 3 1. So 3 is appearing more than 1. Okay, all right. Then 1 2 by size is 2. 2 by 2 1. Wait a second. But in this input, 1 is appearing one time, 2 is also appearing one time. Size is 2. And अच्छा okay okay. 2 by 3 all. इसको भी लीनियर पे करना है, वरना तो मैं फ्रीक्वेंसी से कर सकता हूँ. लेट्स सी पहले इसको. Unordered map and at frequency for auto 8 in nums frequency of 8 plus plus. ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबकी आ गई अपने पास. एक वेक्टर लेंगे. आंसर स्ट्रीम क्वालिटी गुड, प्लीज़ अच्छी हो जाओ भाई. फॉर ऑटो एक्स इन फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे. इफ़ x dot second is greater than nums dot size by 3, then answer dot push back x dot first and return answer. This is correct. Let's submit this. Constraints are okay. Accepted, but at what cost? Oh fuck! Only beats 29%. 8 ms is the time. Okay. Again, lot of lag भाई, कोई आ ही नहीं पा रहा होगा स्ट्रीम पे, इतना लैग हो रहा है.